and a very very good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe at home. Dear children, today in the maths we will continue our lesson number 9, that is halves and quarters. So all of you will open your textbooks on page number 102. Write today's date and classwork first here, and then we will start our work. Today is 1/3/2021 and classwork. Now here you have to color certain things. This is, we have already done the part of it. We have done the C. This is C cut into half. That means we have to color the half picture that was there. Now next is your color the half numbers of shapes as shown here. Now here you can see there are certain shapes are given here, but the total number of shapes we have to count, and then we have to color the half shapes, like 1 2 3 4 5 6 7 and 8 are there. Out of that 8 we have to color half. That means 1 2 3 and 4 we have to color. Next is your, so in all these pictures you have to color the half shapes. Total number of shapes को count कीजिए और उसके आधे जो shapes हैं उसको color कीजिए. जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ आपको 2 को कलर, यहाँ पर कलर 1/4 ऑफ द ईच शेप है, इसलिए 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पर हमने 1/4 मतलब एक ही कलर करना है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का जो है 8 का हाफ कितना होगा 4, और 4 का अगर हम फिर से हाफ करेंगे तो कितना होगा 2 होगा. तो 1/4 ऑफ 8 इज 2, सो वी हैव कलर्ड 2 लीव्स. नेक्स्ट इज अगेन 1 2 3 and 4 cubes are there. Out of that we have to color only 1 cube because we have to color 1/4. This part you have to color 1/4 and this part you have to color half. Now next is match the colored part as shown. Here the colored part or the fraction is given here. Here in the words the fractions are written here, and in the figures the fraction are written here. यहाँ पर फिगर में फ्रैक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेलिंग्स में फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर्स में फ्रैक्शन दिया हुआ है. तो पहले हम जो है पिक्चर और वर्ड्स को मिलाएंगे. See 1 2 3 and 4. In all the shapes there are 4 parts, equal parts are there. So these 2 parts are covered and 2 parts are plain. That means half, आप देख सकते हैं कि half white है और half colored है. So this is your half. Now here 1 2 3 and 4, मतलब 1/4 part is colored, that is called as the quarter. 1/4 part is called as the quarter, so match it with quarter. Now this all the 4 parts are colored, that means the entire picture is figure is colored, so it is whole. And then 1 2 and 3 parts are colored and 1 is left, that means 3/4. Total parts are 4th, यानी कि 3 quarters, 1 quarter, 2 quarter and 3 quarters. So 3 quarters are there. We'll match it with this. Now we have to match these spellings with the numbers. Like this is quarter, quarter is 1/4, then half is 1/2, then 3 quarters is 3/4. 1 quarter का मतलब 1/4 होता है, तो 3 quarters का मतलब कितना होगा 3/4, and last is whole, that is 4/4, that is equal to 1. So this way we have to do the matching. Now we move on to page number 103. Make the other halves. Now here you can see the pictures are given here. Now these pictures are half pictures. You have to complete the remaining half of the picture. Half of the picture is drawn here. Can you complete the picture by drawing the other half? मतलब ये picture आप complete करें दूसरा half जो है इसमें draw करके. जैसे ये flower है तो यहाँ पर हमने flower complete किया. This is butterfly. Same way we have completed butterfly. Now this is the ant. So same way we have completed the other part of the ant. So same way you have to do this also. Now here this is a quarter of a picture. Complete it. How many more quarters you have to draw to complete it? Now this was 1 quarter of the picture was given. एक quarter आपको दिया हुआ था, और remaining आपको जो है इसको complete करने के लिए कितने और quarters चाहिए? 1 quarter is given, then 1 2 and 3 more quarters are needed to complete this circle. तो ये circle complete करने के बाद क्या बना? This is the picture of a sun. So 3 quarters you have to write here. The 3 quarters will be more needed to be drawn to complete this picture. Next is half and quarters of a मीटर. मतलब 1 मीटर के अंदर एक हाफ कितना होता है और एक क्वार्टर कितना मेजरमेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्टार्टिंग ऑफ 1 मीटर. अब पहले हम 1 मीटर का स्केल लेंगे और 1 मीटर के स्केल का हम स्ट्रिंग काटेंगे. One of this string marks the length of half meter, 1/4 meter and 1/3 मीटर. अब एक लंबा सा 1 मीटर का स्ट्रिंग लीजिए. उसमें कौन कौन से मार्किंग्स करने हैं? हाफ मीटर का मार्किंग करना है, 1/4 मीटर का मार्किंग करना है और 3/4 मीटर का मार्किंग करना है उस स्ट्रिंग के ऊपर. सो हाफ मीटर, एज यू ऑल नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स.
Using your string, draw a line of length ½ meter on the floor. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज दिस लाइन. अब आप स्ट्रिंग को यूज़ करके जो है ½ मीटर जो है आप ड्रॉ करेंगे. अब फ्लोर के ऊपर जो है पहले एक ½ मीटर की लाइन स्ट्रिंग कट करिए, दूसरी 1/4 मीटर की स्ट्रिंग कट करिए और तीसरी भी 3/4 मीटर की लेंथ की स्ट्रिंग कट करिए. 3 स्ट्रिंग्स कट करिए और उसके बाद ½ मीटर की आप लाइन ड्रॉ करिए एक उस पे ऊपर स्ट्रिंग की हेल्प से. अब उसको आप मेजरिंग टेप से अगर आप मेजर करते हैं तो ½ मीटर कितना होता है, दैट इज़ योर 50 सेंटीमीटर्स. ½ मीटर कितना हुआ, 1/2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 divided by 2. Convert this meter into centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeters. So 100/2, that is your 50 centimeters. So ½ meter will be 50 centimeters. Moving on to page number 104 now. So ½ meter is 50 centimeters. 1/4 meter कितना होगा, 100 divided by 4, that is 25 centimeters. And 3/4 meter will be 100 divided by 3/4, that is 75 centimeters. 100 into 3/4, that is equal to 75 centimeters. This is how the calculation also I have shown you. This is the way you have to calculate. Now can you see that when we add ½ and 1/4 we get 3/4. Yes, 1/2 plus 1/4, that is 1/2 is your 50 centimeters and 1/4 is your 25 centimeters, that is equal to 75 centimeters. And this measurement is our 3/4 measurement. मतलब ½ और 1/4 को अगर ऐड करते हैं तो हमको 3/4 का वैल्यू मिलता है. Next topic is sharing milk. This bottle is full of milk and इट होल्ड्स 1 लीटर. मतलब ये जो मिल्क का बॉटल है एक जो है इसके अंदर 1 लीटर मिल्क आता है. पूरी जो बॉटल है फुल अगर भरी हुई है तो उसके अंदर 1 लीटर ऑफ मिल्क इज देयर. द मिल्क इज पुट into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. Now this 1 liter of milk has to be divided into 4 bottles of 1/4 liter each. That means in each 4 of the bottles you have to fill it with 1/4 liter. Shade the bottles to show the level of milk in each. अब यहाँ पर पूरा है तो ये पूरे बॉटल का जो है हाफ करो और फिर उसका भी हाफ करेंगे तो 1/4 आ जाएगा. पहले हम बॉटल का हाफ करेंगे फिर उस हाफ में से भी हाफ करेंगे तो हमको 1/4 आएगा. तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है. This all the 4 bottles will have the equal quantity of 1/4 liter of milk. Now remember 1 liter is equal to 1000 milliliters. जैसे 1 meter is equal to 100 centimeters है वैसे ही 1 liter is equal to 1000 milliliters है. Now 1/4 liter of 1000 is कितना हुआ, 1000 divided by 1/4, that is 250 ml. 1/4 liter of milk is equal to 250 ml. How many milliliters of milk does each bottle have? 250 milliliters. This I have shown the calculation over here. Now Shyam poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3/4 liter and the other bottle holds 1/4 liter. Now Shyam ने 1 लीटर मिल्क को इन 2 बॉटल्स के बीच में इस तरीके से डिवाइड किया कि जो फर्स्ट बॉटल था उसमें 3/4 लीटर मिल्क आया और जो सेकेंड बॉटल था उसमें 1/4 आया. क्योंकि 3/4 अगर भर दिया इसके अंदर तो रिमेनिंग इज योर 1/4 दैट इज टू बी गिवन इन poured into next bottle. Shade the level of milk in each bottle. So we have already done this. How many milliliters of milk does each bottle hold? यहाँ पर कितना आएगा, ये 750 milliliter होगा, ये 250 milliliters होगा. You can solve it also. I will show you like this. 3/4 of 1 liter. जैसे 3/4 है तो 3/4 into 1000 करिए. So this will be 250 and this will become 750 milliliters. और ये जो है 1000/4 that is directly 250 milliliters. तो ये 250 milliliters है और ये 750 milliliters है. 3/4 is like this and 1/4 is this. Now we move on to next page. That is your page number 105. Now balance the weight. यहाँ पे आपको 1 kg दिया हुआ है, ये 500 grams है, 50 grams है, 250 grams है. This is your 200 grams. तो वैसे ही different 500 grams, 250 grams इस तरीके से जो है आपको, this is also 250, this is 100 and this is 200 grams also, 200 grams. So different weights are given here. Now choose from these weights above to make the 2 पैंस इक्वल इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट. अब यहाँ पर जो ये पैंस दिए हुए हैं इसमें अगर हमको वेट को इक्वल करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 kgs.
दिस इज योर 2 kgs। तो 2 kgs को हम किस तरीके से हम वे कर सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स याद करके हमको रखना है। तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। तो पहले हम 1 kg का वेट रखेंगे और दूसरा 500 का रखेंगे तो 2 kgs आ जाएगा। और इसको इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन बैलेंस दिस वेट 3/4 kg। 3/4 kg कितना हुआ, 3/4 kg 750 ग्राम्स मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, so that is 750 grams. So these are the different ways by which you can balance the 3/4 kg weight. एक मैंने यहाँ शो किया है, बाकी यहाँ पर लिखे 500 plus 200 plus 50, 250, 250, 250, 250, 250 plus 200 plus 50, that is your 750 grams. So this way you can do it in a different ways. So the last page. Why it is wrong. Now Kanan showed some parts as shown, shaded some parts as shown, but his friend Minnie says that it is wrong. Explain why it is wrong. Now here you can see that 1 2 3 4 parts are there total. Out of 4 parts ये जो एक पार्ट है वो बड़ा है 3 पार्ट से, सो ये अनइक्वल पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सेम वे यहाँ पर भी जो है जो डिवीजन हुआ है दैट इज अनइक्वल, 1 पार्ट इज बिगर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज स्मॉलर, सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। नाउ दिस प्रैक्टिस टाइम इज देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर राइप। 60 मैंगोज में से हाफ राइप है, तो 60 divided by 2, that is 30 mangoes are ripe. There are 32 children, half of them are girls. How many children are boys? Now 32 children में से half of them are girls, तो 32 divided by 1/2 और multiplied by 1/2, तो 16 are boys and 16 are girls. There are 20, मतलब half boys है और half girls है, तो जो half boys है तो remaining half कितने हुए, girls ही हुए, तो 16 are boys and 16 are girls. There are 20 stars, a quarter of them are red. How many stars are red? टोटल 20 स्टार्स है, उसमें से क्वार्टर मीन्स 1/4 आर रेड, सो 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 आर रेड। हाउ मेनी आर नॉट रेड, 20 माइनस 5 दैट इज 15 आर नॉट रेड। जो रेड है उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आर नॉट रेड। Ravi wants a pencil, it costs ₹2. He gives 1 rupee coin, 1 half rupee coin and 1 quarter rupee coin. Is it enough? तो हाफ रुपी मतलब 50 पैसा, क्वार्टर रुपीज़ मतलब 25 पैसा, तो 1 + 50 पैसा प्लस 25 पैसा, सो 1.75, 1 rupee and 75 पैसा इज देयर, दैट इज नॉट इनफ, दैट मीन्स ही इज लेस बाय 25 पैसा और ₹2.5। 25 पैसा इसके पास कम पड़ता है उस पेंसिल को लेने के लिए। 2 रुपये की पेंसिल है और उसके पास कितना है, 1 rupee है, 50 पैसा, 25 पैसा है, दैट मीन्स 1.75 रुपीज़ है और 1 rupee and 75 पैसा है, और उसको 2 रुपये की पेंसिल खरीदनी है, तो 2 minus 1.75, that is 0.25 less. So dear children, with this we come to the end of lesson number 9 in the textbook. Now we'll do with the workbook. Bye bye.